Good morning, everyone. How are you all? सभी ठीक हो? Yes, sir. Okay, very good. My screen visible? Yes, sir. Okay. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जो प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्व ब्राइटनेस ना बेसिकली जो सेंसर में रिसीविंग हो रहा है टोटल रिफ्लेक्टेड लाइट by energy that is I is equal to IS IO IT, right? IS is reflected from ground जो टारगेट से IO is basically scattered energy from atmosphere mainly. It also the neighboring जो है जो टारगेट है उसके neighboring area से पॉसिबल है and ID जो है diffuse light direct from to the ground then atmosphere, that is diffuse. Okay, तो IO and ID are the noise, so that should be eliminated at the time of interpolations. Okay, अच्छा. Next is the magnitude of the brightness component. जो टारगेट है वो टारगेट का ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा जो हमारा का रेडियंस क्या है, रेडियंस. ओके, रेडियंस एंड इरेडियंस क्या है? एनीवन? वी ऑलरेडी डिस्कस रेडियंस एंड इरेडियंस. शिवपति क्या है? सर रेडियंट फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम इरेडियंस कहते हैं. नो 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 नो, दैट इज द यूनिट, करेक्ट. सर बट irradiance is डेफिनेशंस क्या है? irradiance is defined as the radiant flux per unit area. Flux per unit area, correct. Flux is watt per unit area, correct. That is the unit. But definitions क्या है? सर रेडियंस का Radiance and irradiance. सर रेडियंस का तो आपने बताया था कि rate at which the photon strikes the surface. That is irradiance. सर radiant flux. Radiant flux. The radiance, ANC, radiance. सर radiance नहीं पता. Irradiance means the amount of photon that striking on surface. है ना? That is irradiance. And radiance is basically amount of emission, emitted energy per watt per unit square में, है ना? Irradiant is basically incident energy photon, that is watt per square to unit square area. Radiance is opposite, the emission amount. Okay, so radiance depends on the brightness of the study area, brightness of the object, right? Look, visible है. लेफ्ट साइड जो है, देखो लेफ्ट साइड में ड्रॉ करो, स्केच करो. लेफ्ट साइड जो है एक्स एक्सिस में रेडियंस एंड वेवलेंथ, and this diagram is for dark object, less brightness, dark object, and this is bright object. Okay, same object, same, but dark condition and light bright conditions. Object is same, but radiance measured in dark condition and bright conditions. See, the observed at sensor, the radiance observed of dark condition from point 8 to C near about 0.6 तक.
0.06. Okay, right? But in case of the same object, bright in bright light, देखो पॉइंट ऑलमोस्ट 0.44 से 0.4 तक बा 0.38 observed at radiance received in the sensor. Okay, number 1 point. सेकेंड देखो स्कैटरिंग पैटर्न क्या है? स्कैटरिंग पैटर्न जो है स्टार्टिंग मॉडल सेम है, 0.18 से स्टार्टिंग है, बट एटूनेटेड हो रहा है, बट एट नियर अबाउट 0.1.7 में, but scattering still continuing. What is this? This is wavelength. I mean higher wavelength में still scattering is there in bright lights, but dark light में higher more wavelength में वो diminish हो गया, almost finish हो रहा है scattering. Okay, understood? अच्छा, नेक्स्ट देखो सरफेस जो है, सरफेस रिफ्लेक्टेंस जो है फॉर डार्क लाइट में up to maximum 0.05, not more than 0.06, but dark light में bright light में reach up to कितना 0.35 reflectance. Okay, last is diffusion ना diffuse में देखो सेम, diffuse increase bright light में, right, still continuing for the higher wavelength. तो कंक्लूजन क्या है, कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू स्टडी ऑब्जर्वेशंस पे? टेल मी, कंपैरिजन करो. ब्राइटर लाइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क में सेम ऑब्जेक्ट में रेडियंस के क्या क्या कैसे वेरी हो रहा है? तो नॉइज का भी ज्यादा हो रहा है, नॉइज. टेल मी, ब्राइट में नॉइज है, यस, ब्राइट में नॉइज है, बट कंपेयर करो तो शॉर्टर वेवलेंथ एंड लॉन्गर वेवलेंथ में इन टर्म्स ऑफ शॉर्टर में ज्यादा. right, this is basically visible. This spectrum is 0.4 to 0.8, that is the visible, and near eye infrared है point above 0.8 to 0.22 तक, right? तो understood तो brightness is कैसे important है. So the atmospheric effect constitute a larger proportion of the brightness for the dark object than the bright object, especially at short wavelength. Okay, ठीक है. तो कंपैरिजन देखा है, तो ब्राइट एंड सेम ऑब्जेक्ट के लिए ब्राइटर एंड डार्क लाइट में कैसे रेडियंस चेंजेस हो रहा है. ओके, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन. ओके, एब्जॉर्प्शन इस डायग्राम को देखो. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम मीनिंग है. एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एटोन्यूएशंस. एटोन्यूएशंस मींस रिड्यूसिंग द इफेक्ट. ओके, reduction effect, attenuation means reduction effect. Okay,
एटेन्यूएशन मीनिंग समझते हो? एटेन्यूएशन मीनिंग क्या है? डिमिनिश होना। हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, बात करो तुम डायरेक्ट जो विथ एयर तुम्हारे कान तक पहुंच नहीं पा रहा है, बिकॉज एटोनेट हो रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में, सुन नहीं पाता। इट्स मीन्स जो वो एनर्जी खत्म हो रहा है, एटोनेट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट? ओके, सिमिलरली हियर तो ड्यू टू ऑब्जर्वेशन द एटोनेशन कैसे है डिफरेंट। एक सेकंड, okay. So attenuations in y-axis and frequency by wavelength in x-axis. ठीक है? This is the visible spectra, infrared reverse किया है. Smaller to larger wavelength usually ऐसे show, this way the show होता है, but visible इधर, infrared here, right? Then microwave here. See, ठीक है? So attenuations for देखो rain, fog, this one fog, right? Heavy rain, drizzle, okay, and these are the hydrogen, oxygen and H2O molecules. 5 component है: fog, heavy rains, right? Then drizzle and carbon dioxide gas molecules. Better become dark color the gas molecules. Okay. Now see, attenuations जो है, sorry, higher very long wavelength है, long wavelength केस में gas molecules is there, देखो gas molecules, but for visible spectra absorption is very attenuations जो है absorption very less है for visible spectra. Okay, but in the after infrared to or more lesser wavelength में this fog, heavy rain and drizzling का visibility भी एक कांस्टेंट हो जाता है, वेरी चेंजेस नहीं है, कांस्टेंट है, राइट? अंडरस्टूड? स्केच करके ड्रॉ करो इसको. So absorption is the main mechanism that electromagnetic radiation enters with the atmosphere. In contrast to the scattering, this phenomenon causes the molecules in the atmosphere to absorb energy at various wavelengths, right? Ozone, carbon dioxide, water vapor, it's mean any gas molecules, right? Gas molecule are the main atmospheric constituent which absorb the radiations. तो रेडिएशन एब्जॉर्बेंस कॉन्स्टिट्यूएंट है मेनली 3. एक वाटर मोलिकुल्स, राइट? फॉग, वाटर मोलिकुल, गैस मोलिकुल्स जो है, फॉग एंड रेन वाटर. ओके, दिस 3 कंपोनेंट जो है एटमॉस्फेयर का कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर का, दे एब्जॉर्ब द मेन एनर्जी, right? But for higher wavelength, absorption is very less, but visible for wavelength जितना small होते जा रहा है ना,
देखो वेवलेंथ लेंस होते जा रहा है. For that case, water molecular fog की जो absorption is very high. Done. Sketch हो गया. ड्राइंग कंप्लीट हो गया. डन हो गया. No, sir. Let me know when it is completed.
Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. Completed? Supratik done? सर रफ बनाना है ना? हाँ. सर लास्ट में आप चले गए थे, थोड़ी सी बस वैल्यूज रह गई थी. ओ मैं पावर कट हो गया, डिस्कंटिन्यू हो गया वाईफाई का. ओके, कंप्लीट करो. लेट मी नो व्हेन इट इज कंप्लीटेड. यस सर.
डन? Yes, sir. ओके देखो अनदर डायग्राम जो है ओरिजिनल स्पेक्ट्रम दिस वन एंड ट्रांसमिशन थ्रू एटमॉस्फेयर इन परसेंटेज, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस में जो है दैट इज वेवलेंथ. नाउ टेल मी ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा कौन से स्पेक्ट्रम में है? गुड ट्रांसमिशन कौन कौन स्पेक्ट्रम में? सो विजिबल में है, विजिबल में है, वेरी गुड ट्रांसमिशन है. माइक्रोवेव में भी है. माइक्रोवेव में है, बट माइक्रोवेव का एप्लीकेशन नहीं है इतना ज्यादा. देन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में कुछ कुछ पोर्शंस में है, कुछ सर्टेन है. ये दिस वन ये भी है एंड दिस वन आल्सो. एंड infrared, near infrared में this one. Okay. This is near about 0.7 to 1.2 like that. Okay. No, this is 1 or na 1 से plus minus मतलब 0.7 to 1 and 1.3. Yes, 1.3. It's 0.7 to 1.3. This distance is very good transmission capacity. Okay. And these are the basically art materials. That is also good, right? ठीक है. एंड बाकी जो रिमेनिंग है दैट इज ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है एटमॉस्फेयर में. तो एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व हो जाएगा तो सेंसर में रिसीव ही नहीं होगा, है ना. ये भी स्केच करो, ड्रॉ करो. दिस डायग्राम वेरी सिग्निफिकेंट है इंटरप्रेशन में, है ठीक है. सर इसको एक बार दोबारा बता सकते हैं? ट्रांसमिशन मैंने जो रेडियंस है ना रिफ्लेक्टेड हो रहा है, रिफ्लेक्टेड जो ग्राउंड से सेंसर में जा रहा है. सेंसर तो हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ऊपर में ना, आसमान में, स्काई में. तो जो थ्रू एटमॉस्फेयर में जा रहा है, सम पोर्शन ट्रांसमिटेड हो रहा है, सम पोर्शन एब्जॉर्ब्ड हो रहा है. ओके. एंड दिस ट्रांसमिशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ. ओके, अंडरस्टूड? दिस ट्रांसमिशन means passing capacity through the atmosphere. Okay. तो जो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक है, तो कितना परसेंटेज देखो, ऑलमोस्ट ट्रांसमिशन है 90% अबव फॉर विजुअल स्पेक्ट्रा. here is 100%, राइट. सपोज तुम जितना अमाउंट एमिटेड हो रहा है ग्राउंड से सेंसर तक पहुंच में 90% रिसीव हो रहा है बाय सेंसर, रिसीविंग बाय सेंसर फॉर विजुअल स्पेक्ट्रा. बट दिस पोर्शन स्पेक्ट्रा देखो रिसीव ही नहीं हो रहा है. It means basically far infrared, you could write far infrared, right. And this portion middle infrared, some portion receiving नहीं हो रहा है, जो absorb हो रहा है by atmosphere. And the observance depends on the spectra also, wavelength of spectra. Got it? Yes, sir. स्केच करो इसके वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है.
एक्सक्यूज मी Yes. सर, जो नीचे वाला डायग्राम है उसमें जो ग्रीन वाला पोर्शन है जहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, हम्म, सर हम्म, वो क्या हम्म, रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली जो है ना, वो रिफ्लेक्टेड, ये जो नीचे वाला पोर्शन है बेसिकली emitted इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट? ओके सर. emitted, तो आउट ऑफ दैट कितना परसेंटेज ट्रांसमिशन हो रहा है, राइट? एंड आर्ट जो लिखा, आर्ट जो मटेरियल्स है ना, मटेरियल्स बेसिकली जो रॉक टाइप, मेटाफोरा, इग्नियस रॉक, उसका जो रिफ्लेक्टेंस है, राइट, emissions है, that representing, okay, यस सर. mainly geological formation. This is representing surface geological formations, reflectance, okay, ओके. that is near IR to middle IR, okay. यस सर. Completed? Yes. Yes, sir. Okay. So transmission capacity, visible spectrum, and near eye, and some part of UV. Okay, very good. And microwaves. Okay. Next is refraction. Refraction is basically just any electromagnetic spectrum passing through different medium, right? They माने path जो deviate होता है due to different density of the contrast, of different medium. That is basically refractions, right? Refraction is bending of light ray at the contact area between two media during the transmission of light, right? But transmission of electromagnetic radiations, right? It also applicable for the sound wave, na? Any wave. So reflection occurs
add the lenses of camera, magnifying glasses, and atmospheric layer also of varied varied clarity, humidity, and temperatures. It means density contrast mainly. So reflection follow the Snell laws, right? You n1 theta sine theta 1 is equal to n2 sine theta 2, right? A sine theta is basically incident angle of incident. Theta 2 is angle of reflectance. These angles, right? And n is index basically, uh, you can say density, right? n1 n2, right? ठीक है. And atmosphere में जो interaction with surface, जो interaction with surface, with the surface, the electromagnetic radiations reach the Earth's surface and it must be reflected, absorbed, or transmitted. Three option possibility, right? The proportion of these three is, this process depends on the three component, right? You reflected होगा, absorb होगा और transmitted होगा, reflect transmitted reflected होगा. ट्रांसमिशन के बाद रिफ्लेक्टेड होता है, राइट? तो रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड or transmission, whatever, depends on three factors of the subject. Three factors. One is nature of surface. सरफेस क्या है जो इंटरेक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, उसका स्मूथनेस क्या है. ओके. सेकेंडली, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, टाइप क्या है, जो विजुअल स्पेक्ट्रा है, यूवी, आईआर, लाइक दैट. And third is angle of inclinations, right? कौन से angle of inclination by incident electromagnetic spectrum by illuminations, जो कि amount of angle, कितना angle में incident हो रहा है. तो three factor, I repeat. First one is the type of surface, smooth na roughness of the surface. Secondly, type of electromagnetic spectra. And third is the angle of illumination. Illumination means angle of incident ray, right? So reflection occurs very simple. Job rough surface is very smooth, right? When the ray of light is erected as its type as a non-transmitted surface, it means reflected only possible. And जो smooth surface जो है, it depends of size of surface, irregularness, that is roughness but smoothness, in relation to the wavelength of the radiations. And reflection is possible when surface is smooth, relatively the wavelength is specular reflection occurs. If surface is rough, that is diffuse or isotopic reflections occurs. Okay. So specular reflection depends on this. Specular means you can predict, the emitted, the reflected light जो कौन सा direction में जाएगा, reflected होगा. That is specular, right? A diffuse means you cannot predict. So specularity depends on, specular reflection depends on the smoothness, surface smoothness. तो surface smooth होगा तो जो angle of incident and angle of radiation जो है, radiation, तो will be same. That is the specular, and this depends on the surface smoothness. See, surface is smooth, so in the vertical line angle, so incident ray, the angle between verticals and incident ray and angle will be same. The reflected ray, both angles are same. Now if surface is rough, so incident ray and reflected, angle of incident and angle of reflected will be different, right?
and that is called diffuse. So specular and diffuse reflections. Reflection two types: specular reflection and diffuse reflection. The specular reflections occur when smooth surface tend to direct incident radiations in a single directions. Okay. For diffuse reflection, you cannot predict the reflected directions. Okay. Second is, this is the reflection. Second is जो transmission, illumination basically depends on the uh, type of spectrum, right? According to Lambert cosine's law, right, which state that observe the brightness I of such a surface of proportional to the cosine of the incident angle, where I is the brightness of the incident radiation as observed at zero incidence, right? Then I dash equal to I by cos theta, right? The relation is often combined with the equally important inverse squares law, right, which state that the observed brightness decrease according to the square of the distance from the observer to the square. It means I dash, right? I dash is equals to I by d square cos theta. Okay. So what is I? I is the brightness of incident radiations. Okay. What is d? D is distance between the source and object, and theta is amount of inclination with the verticals. Okay. To transmission of the radiations occurs when radiation passing through a substance without significant attenuations. It okay, without significant attenuations, right? From a given thickness, depth, and of substance, the ability of medium to transmit energy is measured as a transmittance. Okay, T. T is basically transmitted radiation by incident radiations. So it is the percentage. Transmittance is basically the percentage ratio between the transmitted radiation by incident radiations. Okay. So 100% transmittance, its mean absorbance is zero, right? 100% T value, its mean absorbance in zero, right? देखो टू डायग्राम शो हो रहा है ए बी जी आर थ्री स्पेक्ट्रा थ्रू एनी मीडियम थ्रू ट्रांसमिटेड हो रहा है इस BGR ट्रांसमिशन हो रहा है इट्स मीन जीरो ऑब्जर्वेंस right in these diagrams BGR three color spectra transmitted but G are only transmitted, B is absorbed, right? ठीक है. So incident radiation passing through an object without significant attenuations. Significant attenuation means the amount of observance, means वही mean कर रहा है, right? Or B is selectively transmitted. This is the right one. The object of the right would be act as a yellow minus blue. The blue, green or red is blue. Green plus red is blue, right? Filter. So as it would be transmitted, all visible radiation except for the blue. Okay. Next is fluorescence. Fluorescence occurs when an object illuminated with radiations fluorescence occurs when illuminated with a radiation of one wavelength emits radiation at a different wavelength. Okay, it's mean
on an object, right, emitted is different wavelength, emitted with a different rate, means incident ray is one spectra and reflected is different spectra, number of spectra, that occurs basically fluorescence. It's mean illuminated, it's mean incident is one radiations and reflected is different wavelength radiations. For these reasons fluorescence occurs. The most of the familiar example of the some sulfide mineral example, some sulfide minerals such emitted visible radiation, right, when illuminated with the ultraviolet radiation. UV इंसिडेंट हो रहा है, सल्फाइड मिनरल में डिफरेंट कलर शो होता है, इंसिडेंट है UV but emitted is visible. UV single spectra but reflected is number of spectra, this is visible spectra. Okay, this is the examples of the fluorescence. Next is reflectance. Reflectance is very simple, observed brightness by irradiance. Observed brightness by irradiance. देखो बहुत सारे टर्म्स बात किया थे, irradiance, radiance, reflectance, fluorescence, transmittance. सारा नोट करो, डेफिनेशन पकड़ना है लोगों को. लिखो, फर्स्ट लिखो, नोट करो, रेडियंस, इरेडियंस, ट्रांसमिटेंस, फ्लोरेसेंस एंड रिफ्लेक्टेंस. 5. Okay. Reflectance is basically ratio between brightness, observed brightness by upon irradiance, right? Irradiance against that is basically incident flux, है ना? The irradiance जो आज स्टार्टिंग में बताया था, unit is basically watt per unit area. Okay, so for many application of remote sensing, the brightness of the surface is best represented as reflectance. Okay, the reflectance is expressed as the relative brightness of the surface as measured for the specific wavelength intervals. Understood? Reflectance is expressed as the relative brightness of the surface is measured for a specific wavelength interval. So reflectance is basically observed brightness and irradiance. Okay. Last is polarization. Polarization is basically जो एक electromagnetic spectrum, one is electromagnetic field, right, and propagation of electromagnetic radiations, two-way. So field directions, electromagnetic field is directions and propagation directions, right? So horizontal with respect to the electromagnetic field, propagation of electromagnetic energy with respect to the electromagnetic field directions can be divided two. One is horizontal and other is vertical. देखो, this is the directions of propagations, right? Direction of propagations and movement of this electromagnetic is horizontal, that is XY, that is horizontal polarizations, and vertical polarization is perpendicular this horizontal propagation, that obviously verticals, this is Z directions. Understood? The polarization of electromagnetic radiation denotes the orientation of oscillation with the electric field of electromagnetic radiations, right? A schematic diagram is a representation of horizontal and vertical polarizations, and smaller arrow significant the orientation of the electromagnetic field. Okay, so basically the respect to orientation of electromagnetic field का एक directions है, तो with respect that the propagation जो है electric orientation का horizontal है ना vertical है. If horizontal, then horizontally polarized,
or if vertical, then vertical polarization spectra. Okay. Any questions? Any questions? सर एक बार रेडियंस की डेफिनेशन दोबारा बताना. Radiance is brightness by irradiance. No, that is the reflectance. Radiance is basically जो है ratio जो emitted reflectance, emitted and incident irradiance. I repeat. Irradiance क्या है? What is irradiance? Irradiance is basically जो flux है. What is flux? Tell me what is flux? Sir, amount of photons scattering, Yes, striking that the is energy. surface. Unit क्या है? Watt, है ना? Yes, sir. कितना watt है? That is the flux. Now irradiance is per unit area में receiving energy. That is the irradiance. Receiving of spectrum by energy per unit area. That is irradiance. Now after receive इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्टेंट होगा, इमिटेड होगा. तो सिमिलरली ये जो एमिशंस हो रहा है, दैट भी एनर्जी एमिशंस हो रहा है ना. तो एनर्जी एमिशन पर यूनिट एरिया, दैट इज रेडियंस. क्लियर? अंडरस्टूड? Yes. अंडरस्टूड. तो यूनिट क्या होगा रेडियंस का? अगेन वाट पर यूनिट स्क्वायर. यूनिट एरिया, वाट पर यूनिट एरिया. इरेडियंस एंड रेडियंस का यूनिट सेम है. इरेडियंस एंड रेडियंस के यूनिट आर सेम. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ऑब्वियसली इरेडियंस वैल्यू ऑलवेज मोर देन रेडियंस वैल्यू. ठीक है. रिफ्लेक्शन इज बेसिकली ब्राइटनेस बाय इरेडियंस. ऑब्जर्व ब्राइटनेस बाय इरेडियंस. ओके. एनी क्वेश्चंस? Any questions? Okay. No, sir. Attendance. Sir?
प्रेजेंट सर। अक्षय राज, अक्षु, Present, sir. Alankrit, Present, sir. Aliza, Amtaj, Tichan, Diksha, Present, sir. Gurmeet, प्रेजेंट सर। Harshita, Kattabba, Present, sir. Kattabba, Present, sir. Kirti, Present, sir. Present, sir. Manjot, प्रेजेंट सर। Mansi, Present, sir. Manu, Present, sir. Navneet, Niti, Oshan, Pratibha, Present, sir. Ramneet, Present, sir. Shalandeep, okay, Sharansh, Present, sir. Shreya, Shreya, Present, sir. Present, sir. Shreyansh, Yes, sir. Yes, sir. Supratik, Present, Simran, sir. Present, sir. Somesh, Somas, Present, sir. Present. Sonal, Yash, Sonal, Yash, Sir. huh? Your name? Mrinal. Sir Pratibha is present. Okay, done. Mrinal. Sir Pratibha. Okay, done. ठीक है. अच्छा प्रैक्टिकल Sir, 2 o'clock ना? हाँ, okay, 2:30 प्रैक्टिकल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ओनली. हाँ, ठीक है. सर हमारे मिड टर्म भी Sir Pratibha is present. हाँ, दे दिया. है मिड सेम? Sir, yes is present. Yes. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर हमारी मिड सेम भी 15th मई से है तो उसका सिलेबस क्या होगा? अभी तो कुछ नोटिस आया नहीं है. सर आज बीपीएस सर बोल रहे थे कि 15th मई से हमारा. ओके. तो Yes, sir. सिलेबस जो हुआ है लेक्चर ऑलरेडी मैं कर दूंगा नेक्स्ट वीक में. ओके, विल डिस्कस नेक्स्ट वीक. ठीक है. Okay. ओके.